नमस्कार, सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की ताजा तरीन और अहम खबरें। जिला प्रांत मराठी गर्ल्स स्कूल बार्शी टाकली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सप्ताह में प्रत्येक दिन एक विशिष्ट गतिविधि के लिए निर्धारित किया गया था। इस सप्ताह निम्नलिखित गतिविधियां की गई। सोमवार 22 जुलाई 2024 को अध्ययन शिक्षण सामग्री दिवस। इस दिन छात्रों ने चार्ट बनाए, जानवरों के मुखौटे बनाए। वाचन एवं कथावाचन का आयोजन किया गया। मंगलवार 20 जुलाई 2024 को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता दिवस, गणितीय रंगोली उपलब्धि चार्ट बनाए गए। स्कूल सर्किट के दौरान एक निपुण प्रतिज्ञा ली गई। भाषाई खेल एवं सुलभ खेल आयोजित किए गए। बुधवार 24 जुलाई 2014 खेल सांस्कृतिक राजनीतिक दिवस के अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। गुरुवार 25 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक दिवस। इस दिन छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वेशभूषा, भोजन, कला, नृत्य, गीत, नाटक, कहानी सुनाना आदि शामिल होते हैं। विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को कौशल और डिजिटल गतिविधि दिवस। इस दिन छात्रों के संचार कौशल और खरीद बिक्री कौशल पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया गया। शनिवार 27 जुलाई 2024 को क्लब गतिविधियां। शालीन पोषण दिवस के अवसर पर स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई और इको क्लब की स्थापना की गई। रविवार 28 जुलाई 2024 को सामुदायिक सहभागिता दिवस के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्नेह भोजन परोसा गया। विद्यार्थियों ने प्रत्येक दिन का भरपूर आनंद उठाया। इस प्रकार शिक्षा सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्राचार्य को, नंदा मावले एवं सह शिक्षक को, संघमित्रा लाइव को, रंजना लीपते को, शिल्पा वाघमारे ने प्रयास किए। देखिए बार्शी टाकली से कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ इरफान शेख की खास रिपोर्ट। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24। हा आमचा आता 7 दिवसाचा शिक्षण सप्ताह होता। 7 वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले होते। आज शेवटचा दिवस। शेवटच्या दिवशी हा स्नेह भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। तर यामध्ये आम्ही पावसामुळे असे निवडक मेनू ठेवलेले आहे। पुरी, भाजी, सोनपापडी आणि फोडणीचा भात। पहिल्या दिवसपासून आम्ही विविध कार्यक्रम आमच्या शाळेमध्ये सादर केले। तर पहिल्या दिवशी होतं साहित्याची ओळख। ज्या आम्हाला साहित्य पेटा मिळालेल्या आहेत त्या प्रत्येक साहित्याची ओळख करून विद्यार्थ्यांकडून विविध कृती तयार करून घेतल्या आम्ही। त्याच्यामध्ये भाषा, गणित असे अनेक विषय होते। दुसरा दिवस होता तर दुसऱ्या दिवशी गणिताच्या रांगोळ्या, उपक्रम, साहित्यातून रांगोळी कशी तयार करायची, अशा प्रकारे आमचा दुसरा दिवस साजरा झाला। त्याच्यानंतर तिसरा दिवस होता आमचा खेळाचा दिवस होता। त्या दिवशी आम्ही क्रीडांगणावर विविध खेळ घेतले त्यांचे। देशी खेळ, विदेशी खेळ किंवा वैयक्तिक खेळ, त्याच्यामध्ये धावणे, पळणे, लंगडी घालणे, देशी खेळांमध्ये मुलींची लगोरी, चमचा लिंबू, 3 पायाची शर्यत असे विविध खेळ आम्ही घेतले। आणि त्या कार्यक्रमात मुलांना एवढा आनंद वाटला की दिवसभर ते सोडायलाच तयार नव्हते। शाळेतून जायलाच तयार नव्हते घरी। मॅडम शेवटचा दिवस आहे। आज शेवटचा दिवस आहे। प्रमुख कोण आले? आमचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे आले होते, पण ते त्यांचे कार्यक्रम असल्यामुळे, म्हणजे त्यांचे हॉटेल असते आमच्या अध्यक्षांची, चव्हाण भाऊची, जनार्दन सुखदेव चव्हाण यांचे स्वतःचा बिझनेस असल्यामुळे ते आले आणि भेट देऊन निघून गेले। अजून या 7 दिवसामध्ये तुम्हाला कोणी भेट दिली? पहिल्या दिवशीच आमच्या विषय तज्ञ मानाईत मॅडम येऊन गेले, त्यांची भेट झाली। केंद्रप्रमुख मॅडमची पण भेट झाली आणि शिक्षकांच्या वगैरे आमच्या भेटी अशा चालूच असतात।